Barcelona's next match versus PSG. But before we talk about the match that Barcelona has versus PSG on the field, I'd like to talk about the match that Barcelona had with PSG off the field. The recent Ballon d'Or ceremony in which we saw Dembele lifting the Ballon d'Or. Quite a lot of controversial results in the list if we talk about top 15 maybe. But what's your take on the overall Ballon d'Or ceremony? So I think overall Ballon d'Or, I believe the only saving grace for this year's Ballon d'Or ceremony was that the first place Dembele, my recording was correct. It might have been a good fight with which player. Let's talk about it. But I believe first place Dembele was a right call. उसके अलावा आई थिंक द बैलन डॉर रैंकिंग्स वर अ फसाड दिस टाइम Hmm. लाइक नेम किसी भी फुटबॉल फैन से राइट आस्क क्वेश्चन कि नेम 10 प्लेयर्स हु वर बेटर देन पेड्री लास्ट ईयर राइट and I don't think a good consistent football fan who knows football will go ahead and say that I can name those 10 players. Not possible, right? Hmm. Similarly, a player like Rafinha who gave Ronaldo's one of the best forms in Champions League go a run for his money, right? Probably first या second पे है in goal assist contribution, right? ठीक है, Hmm. दो matches ज़्यादा थे, but still, he even played one less match, right? Final खेलता तो और भी Hmm. match होते तो equal हो गए. So probably a player who had that level of season, right? Plus a domestic treble. How can you rank that player as your fifth best player in the Hmm. world, right? So I think it was a facade. One thing that came out or जिसके लिए Barcelona fans should hold themselves accountable is the cannibalism that we as a fan base did to Rafinha's vote, right? Hmm. Even I am guilty of that, right? यमाल को हमने बहुत ज्यादा हाइप अप किया विच इज ओके इज हाइप को हमें बहुत फ्यूचरिस्टिक भी सोचना चाहिए था when you hype up a talent you hype him up for maybe next 2 3 4 5 or for Yamal's case 15 years, right? But एकदम immediate hype up करने की जरूरत नहीं थी. The fan base is guilty of that और उसका रिजल्ट आई थिंक अवार्ड सेरेमनी में दिखा कि यस यमाल इज योर सेकंड बेस्ट प्लेयर दैट केम आउट in the Hmm. Ballon d'Or ranking. But was he better than Rafinha last year? I don't think so. Right? Oh. By the sheer goals, assist, attitude that came on the field, yes, Rafinha का भी होगा, comparable होगा, competitive होगा. But was it better than Rafinha? I don't think so. Yamal was easily the second best there. So Barcelona's fan base is also guilty of what happened on the stage. But yeah, overall, this entire ranking was a facade. Cole Palmer being top 10 better than Petri, that in itself for me is a Hmm. closing point to say that this year's Ballon d'Or was not good. Also Hakimi I think also was there. तो I think Correct. थोड़े बहुत I think ranks ठीक नहीं थे. I agree. I think Dembele should have won, deserved to win. Um, आई थिंक रफीनिया को मैंने तो सेकंड रखा था कि रफीनिया नॉट जस्ट अबाउट नंबर ऑफ गोल्स उसने गोल्स आई थिंक टॉप मैचेस के अंदर अगेंस्ट मड्रिड अगेंस्ट बायर्न आई रिमेंबर इंटर के अगेंस्ट भी मारा था उसने आई थिंक व्हेन यू वेंट अप Correct. 3-2 राइट तो Correct. आई थिंक रफीनिया डिजर्व द सेकंड स्पॉट व्हेन यू टॉक अबाउट कैनिबलिज्म आई थिंक कैनिबलिज्म एक रीजन था कि रफीनिया सेकंड नहीं आ पाया. Also, the another reason was the lack of PR that Rafinha had. Rafinha literally had no PR. I think this is reflected in the fact कि उसको zero journalist votes मिले हैं for rank one position. I think very Correct. rarely that you see a player getting zero votes from and not getting any votes from any journalist, right? So I think उस sense में थोड़ा खराब रहा रफीनिया के लिए. Others I think पेड्री के लिए भी justified नहीं है. राइट एंड ओवरऑल मुझे मेरा ये टेक है बैलन डोर पे कि मेरे को ऐसा लगता है कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी स्पेशली जब वो फ्रांस फुटबॉल के पास गया ये सब गया. एक तो क्या है कि एवरी ईयर दे चेंज द वोटिंग क्राइटेरिया एवरी ईयर दे चेंज. इस साल आई थिंक क्लास वाला फैक्टर उन्होंने रखा था पिछले साल भी कुछ चेंज किया था एंड इफ यू Correct. वांट टू चेंज एवरी ईयर ठीक है करो बट डोंट चेंज डोंट चेंज इट एट द लास्ट मोमेंट. अनाउंस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन ताकि हर किसी को पता है कि ये रैंकिंग क्राइटेरिया से मुझे ये चीजें करनी है. बट तुम Correct. लास्ट मिनट जस्ट एज पर योर कन्वीनियंस चेंज कर दोगे. पिछले साल आई थिंक विनी वाज रॉब्ड ऑफ अ बैलन डोर. एवरीवन agreed कि विनी शुड हैव won.
बट इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ना देयर आर पॉलिटिक्स दैट इज़ गोइंग ऑन विद बैलेंडोर एंड इट इवेंचुअली कम्स डाउन टू कि किसका पीआर ज़्यादा है, किसका पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा है, तो आई थिंक Correct. थोड़ा-सा फँसा Agree. And with this, I think Brazilians not getting Ballon d'Or वाला debate भी वापस ignite हो जाएगा, right? Neymar, राइट। then Vinny, now Rafinha, right? Which also brings us to the match that is about to happen on the pitch, right? हुँ, Probably एक ऐसा match that everyone wanted to watch last season, maybe as हुँ, a final of the Champions League. We almost had that, right? Barring that last 2 minutes अगर 2 नहीं होते मिनट्स तो we would have फाइनली had फाइनली this सम final. पॉजिटिव नोट फॉर मी ऑन इन दिस पॉडकास्ट कोई नहीं 5-2. Anyways, so what's your take as a rival waiting for this match, or in general as a football fan waiting for this match, because I will have my biases. So even before going that, as a rival and as a football fan, what's your take on this match? So yeah, I think this was the deserved final last year Champions League का. Unfortunately, fortunately, we didn't get that final. But I think अगर last year ये final होता तो I think PSG would have won. मेरा take ही है. PSG was too strong for Barca even last year. I think this year PSG थोड़ा सा I think has been impacted by injuries. For that matter, Barcelona is also affected by injuries. तो उस सेंस में आई थिंक द ओवरऑल हाइप एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस विल बी अ लिटिल डाइल्यूटेड कि अभी वो क्लैश ऑफ द टाइटन्स वाली चीज नहीं रही है राइट अभी थोड़ा दोनों साइड से इधर से आई थिंक पीएसजी से आई थिंक डेम्बेले देयर बेस्ट प्लेयर इज इंजर्ड ड्यूरे इज इंजर्ड मेरे अकॉर्डिंग पीएसजी का बेस्ट प्लेयर विटीनिया इज नाउ इंजर्ड हु यूज्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम पीएसजी's पर्सपेक्टिव तो आई थिंक और भी आई थिंक 2-3 और प्लेयर्स उनके इंजर्ड हैं अभी करंटली and Barca से भी you have your injured players as well. But considering this match is at Barcelona's home and मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी लिस्ट पीएसजी की थोड़ी ज़्यादा वैसी है कि क्रूशियल प्लेयर्स गए हैं। सो इफ यू वर टू से कि हाँ, भी दोनों की प्लेइंग 11 बनाऊँ, तो बार्सिलोना की प्लेइंग 11 तुम खुद भी बना लोगे। यू विल पुट रैशफोर्ड जो अभी रिसेंटली अच्छे गोल्स मारे हैं उसने, है ना? यू विल पुट र राफिनिया ऑन द राइट विंग, ओल्मो है, लेवेंडोस्की है। बट वुड यू बी एबल टू मेक अ ग्रेट स्टार्टिंग 11 फॉर पीएसजी? मुझे लगता है शायद अभी नहीं बना पाओगे एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट उनके अवे अवे मैच है तो इस सेंस में मुझे लग रहा है कि इट शुड बी इन इजी विन आई विल से कि फॉर बार्सिलोना आई थिंक इजी विन फॉर बार्सिलोना So I think I agree on the injury wala part. That both the teams are going through grievous injuries. Dembele is their best player, Vitinha, right? And then उसके बाद Desire भी अभी doubtful है कि start करेगा कि नहीं. So I agree on the PSG's part. Injury वाला problem बारसा के साथ भी है. Rafinha is out, like probably let's say our second best player or somewhere top three player, right? Attacking for like an attacking force in itself. So Rafinha is out. Fermin Lopez is out, right? But I think Joan Garcia as a difference maker is also out. So the way I see it is, Joan Garcia getting out is not same as Ter Stegen getting out, right? Because he is not a goalkeeper who was on his downward trend या फिर उसके जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है. It will change the way you approach the game, right? There might be additional shots coming in जो जॉन गार्सिया शायद एंटिसिपेट करके रोक लेता बट अभी नहीं कर पाएगा. So I think that's one problem that Barca is anyways facing. The Barca has it comparatively easy given the drop off for PSG is much larger, right? क्योंकि हमारा अगर रफीनिया अगर बेंच होगा तो हमारा यमाल आ रहा है कमिंग बैक, राइट? सो द ऐसा कोई ड्रॉप ऑफ नहीं हो रहा है हमारा. सिमिलरली फर्मीन लोपेज इज आउट, ऑल्मो विल प्ले, राइट? तो वो ड्रॉप ऑफ नहीं आ रहा है, राइट? सो आई एग्री कि बार्सिलोना even with the injuries that we have is much better placed to win this match. होम फैक्टर को मैं इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर से नहीं मानता क्योंकि बार्सिलोना का होम इज नॉट दैट स्केरी होम ऑफ कैंप नो राइट नाउ. However, Barca will have to fight for it because of the qualities of players like Hakimi on the right back, Carva on the left wings, right? They still have players like Barcola, right? Who will come.
who will now start this match. उनको रेस्ट भी मिल गया था अभी इस वाले वीकेंड में. There is Ramos and the striker. I think थोड़ा underrated striker है, but I would consider him at the same level as Ferran Torres, right? So if you're trusting कि Ferran Torres तुम्हारा एक top striker है for a team like Barcelona, then Ramos उनका बैकअप स्ट्राइकर वाले पोजीशन पे एक तरह से खेल रहा है, राइट? सो आई डोंट थिंक कि दे डोंट हैव द क्वालिटी टू डू इट राइट नाउ. हाँ, Vitinha injuries is something that scares me more for them. Like for me, I'm happy. But Vitinha injury for them is a rather larger drop off than any other player. तो डेम्बले का आउट होने के बाद मैं बोलता इवेंट है मैच, हमारा रफीनिया गया, उनका डेम्बले गया. But because of Vitinha's injury, I would say this is a drop off. However, I wanted him to play. ये पेड्री वर्सेस विटिनिया का डिबेट भी थोड़ा सेटल हो जाता. नाउ वी हैव टू वेट इवन मोर. बट मैं अभी चेक ही कर रहा था. सो देयर स्टार्टिंग मिडफील्ड फैबियन रूइज, नेवेस एंड विटिनिया तीनों आउट हैं, तीनों इंजर्ड हैं. नाइस. क्रावास्केलिया इज इंजर्ड, No, he ड्यूरे played, no? एंड डेम्बेले. नो, आई कैन सी अभी फॉटमॉप पे दिख रहा है. अच्छा, ओके, He क्योंकि मुझे he लगा got कि कल खेला था वो. ओके, PSG. 46 पे गया था. पॉसिबल ही वाज बैक, आई थिंक. अच्छा, बाकी कल खेला था. डेम्बेले, ड्यूरे, तो उनका जो अटैकिंग भी डायनामिक है, थोड़ा-सा डाउटफुल है. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बार्सिलोना की फर्स्ट गेम से पहले तूने मुझे एक चीज़ कही थी कि कंसिडरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, इंजर्ड लिस्ट है, ये सब चीज़ें, और पीएसजी का मैच होम पे है हमारा, ये अवे है, कंसिडरिंग कि अभी ये स्टार्टिंग है बिल्कुल. तो तेरे अकॉर्डिंग न्यूकासल वाला मैच इज द टफेस्ट, एंड आई आल्सो करेक्ट. अग्री. तो आर करेक्ट. यू आल्सो करंटली ऑन दैट स्टैंड कि आगे सारे मैचेस इजी हैं कंपेयर टू द न्यूकासल, एंड नाउ कंसिडरिंग तुम जीत भी गए हो, तो शुडंट बी अ डिफिकल्ट रूट फॉर यू. ऑन पेपर कंपैरेटिवली यस. मतलब अगर not not their 100% fit PSG को, I would say that their drop off is much larger, right? So I would say that this is a better placed match than Newcastle. But then football is football, right? Sometimes even Ajax can defeat a team like Real Madrid. So we just can't say कि आगे कोई matches आसान होने वाले.